Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dignitaries, all the dignitaries are inviting to come on dais with Professor Muhammad Habib. Hamidullah Marai sir, Dr. Edwin, Victor Edwin sir. Harmohinder Singh Bedi sir. उनको बता दें कि कनेक्ट नहीं हो पा रही ये जो सोर्स है इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मैं शुरू करूँ उनको मैसेज कर दो के बाद में कर दो फिर मना ही कर दो छोड़ दे मैसेज कर दो ठीक स्टार्ट मैसेज कर दो वो कनेक्शन नहीं स्टार्ट अपने पास रखो स्टार्ट करो स्टार्ट Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very good morning to all of you. I would like to begin this inaugural session, Dr. Mr. Saleh Amin, Research Associate, Department of Translation and Publication, MANUU. Please come and recite few verses from the Quran. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. मोहतरम हाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने सूरह मायदा की आयत नंबर 48 की तिलावत की गई. इनका इंग्लिश तर्जमा है, We have sent down to you the book with truth. We have sent down to you the book with truth, confirming the book before it and a protector for it. So judge between them according to what Allah has sent down, and do not follow their desires against the truth that has come to you. For each of you we have made a law and a method. Had Allah willed, He would have made a single community of people, but He did not, so that He may test you in what He has given to you. Strive then to excel each other in good deeds. To Allah is the return for all of you. Then Allah shall tell you about that in which you disputed. Thank you. Thank you, Salamin. It is with immense pleasure and a deep sense of honor that I extend a warm welcome to all of you to this inaugural session
of the International Conference on Dimension of Interfaith Dialogue in India. This conference is a significant platform for intellectual and cultural exchange, bringing together scholars and thought leaders to explore the historical, philosophical, and contemporary aspect of interfaith dialogue in India and beyond. This conference is a timely and essential platform to explore these dimensions. Through your voices, insight, and expressions, we aim to examine how interfaith dialogue can be a tool not just for harmony, but for societal transformation. Let us reflect on how to cultivate empathy and polarized world, how to strengthen the interfaith solidarity in the face of global challenges, and how to weave the threads of dialogue into the larger fabric of nation building. So we are privileged to have our esteemed gathering of distinguished personalities whose contribution to academia and interfaith discourse are invaluable. It is an honor to have welcomed our chief guest, Professor Harmohinder Singh Bedi, Chancellor, University of Himachal Pradesh, a visionary leader and a scholar whose insight continues to shape academic discourse on interfaith dialogue. Adding depth to our esteemed deliberation, we are privileged to have Professor Hamidullah Marazi, our keynote speaker, whose scholarship and research in interfaith dialogue offer crucial perspectives on the evolving dynamics of religious coexistence. We are also honored to have Dr. Yahya Jahangiri from Iran and Dr. Packham T. Samuel, though he is not here because of his journey from Germany to India today. At itself, it's 6 a.m. So we have Mr. Dr. Victor Adwin in his place uh, as a guest of honor, whose international perspective enrich the global discourse on interfaith understanding. Presiding over this session, we have the esteemed presence of Professor Syed Ainul Hassan, Vice Chancellor Maulana Azad National Urdu University, whose leadership and scholarly contribution continues to inspire critical engagement with interfaith studies and cultural dialogue. Additionally, we are delighted to welcome distinguished scholars from prestigious universities across India, Iran, Malaysia, Mauritius, Canada, and Brunei, whose presence enhanced the academic rigor and diversity of this conference. Among them are few names I want to describe here. Professor Latif Hussain Shah Kazmi Sahab is sitting there. Professor Kapil Kapoor Sahab, he is online, but due to some health issues, cardiac uh, technicality, he is not available. Professor Muhammad Farid Ravi, he is from Malaysia, he is not available. Professor Muhammad Murtaza Mohsini, he will attend the online session after this inaugural session. Professor Maqsudur Rahman from Bangladesh, he will also be online. Dr. Mohsin Muhassal Yazdi and Dr. Mohsin Norai, Dr. Muhammad Ibrahim Roshan Zamir, Dr. Tabrez Surmali, they all will be in online session after inaugural session. We have our Indian guests like Dr. Khurshid Imam Sahab, Dr. Naseem Gul Sahab, Dr. Rehan Akhtar, Dr. Nadeem Ashraf, Dr. Victor Adwin, and Dr. Manpreet Singh Sahib. Their contributions, spanning diverse academic and cultural contexts, will undoubtedly enrich our discussion, offering varied perspectives on the dimensions of interfaith engagement. Now, I invite Professor Muhammad Habib to formally welcome our guest and speak about the conference. Thank you, Adif Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ए जोश जुनू बेकार न रह कुछ खाक उड़ा वीराने की दीवाना तो बनना मुश्किल है सूरत ही बना दीवाने की. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑनरेबल वाइस चांसलर पद्म श्री प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, another Padam Shri Professor Harmohinder Singh Bedi, Chancellor of the Central University of Himachal Pradesh, Professor Hamidullah Marazi, former Director of the International Centre for Spiritual Studies,
Professor Yahya Jahangiri, Chief Director, Islamic Culture and Relations Organization, Iran. Our distinguished father, Reverend Edwin, from the Henry Martin Institute, International Center for Research and Interfaith Dialogue. Professor Latif Kazmi, professor from Aligarh Muslim University, and other professors from Aligarh Muslim University, all respected deans, directors, heads of the departments, and a galaxy of eminent scholars from various countries, professors, researchers, and dear students. I feel honored to welcome you all to this conference on a widely accepted and most timely required theme, dimensions of interfaith dialogue. The discussions we will undertake aim to address core issues surrounding the interconnection of people from various faiths, cultures, and civilizations, ultimately promoting coexistence, peace, and wholesome growth nationally and internationally. At this moment, one point comes in my mind of historian Arnold Toynbee, who said that the study of civilization holds greater significance than the study of states and rulers. Humanity has at times failed in its attempts to create a worldwide syncretic religion, one blending all faiths and practices. History has shown that such an endeavor, as seen in the efforts of Emperor Akbar in India and King Julian in the Roman Empire, is not feasible. What is achievable, and indeed what humanity requires most, is to cultivate open-mindedness and open-heartedness toward all religions and cultures. Through this approach, our spiritual and cultural heritage would transcend individual faiths, becoming a shared legacy for all humanity and fostering a sense of collective belonging. This vision is embodied in the theme of this conference, which was conceived by our esteemed Vice Chancellor, Professor Ainul Hassan. The theme includes the word dimension, reflecting the multifaceted nature of the subject and this gathering. This conference explores various dimensions of interfaith dialogue and the significant contributions of Indian scholars to this field, spanning from ancient times to the present. It is not limited to interreligious dialogue, but also includes internal faith perspectives. The primary goal is to deepen our understanding of the historical and ongoing contributions of Indian scholars to both interfaith and intrafaith dialogue. This conference is not only an academic undertaking, but also a celebration of the diversity and dynamic culture of India and the world. Friends, dialogue is more than just verbal exchange. It is a reciprocal process between individuals and groups taking place through various encounters and interconnections. Dialogue, in its true sense, is its life itself. No religion or culture exists in isolation. In fact, they are interconnected and part of continuous process of history. To be human is to engage in interpersonal relationship. To be cultured is to be embrace intercultural exchange. To develop is to participate and interact. And to be religious is to interreligious. Dialogue is not a means of conversion or proselytization, but a means of mutual understanding of the deep meanings of various faiths. In the context of ongoing global development, uncritical pragmatism can lead to the dehumanization of science and technology, resulting in their misuse, as seen most evidently in modern warfare. While moral and religious restrictions could provide a good balance in socio-political and economic life, excessive emotional religiosity and religious identities can foster social discord and political strife. We must refrain from this path to preserve peace and coexistence. It is particularly noteworthy that MANUU is nurturing pluralistic values among students through the mandatory teaching of major world religions in all undergraduate courses, alongside the MA in Islamic Studies under the guidance of the Department of Islamic Studies. This conference will consist of 5 to 6 technical sessions in addition to the inaugural and valedictory session,
one or two, the sessions are structured as panel discussions. On February 4th at 11:45 a.m., we will hold the Dr. Muhammad Hamidullah Memorial Lecture delivered by Professor Hamidullah Marazi and chaired by our Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hassan, in this very hall. I request you all to attend this special and historical lecture also on the theme Islamic Studies in the Postmodern Era, Challenges and Possibilities. I am deeply grateful to our Vice Chancellor and other authorities of the university, the Registrar and Deans for their cooperation, patronization of this conference. I also extend my heartfelt thanks to all our distinguished guests and participants for dedicating their valuable time to this event. Special thanks to Professor Kapil Kapoor, Professor Hamidullah Maraji, Professor H.S. Bedi, Professor Alim Ashraf, and Professor Shahida Murtaza, Dean Social Sciences, whose constant encouragement and valuable suggestions have been instrumental in organizing this conference. I acknowledge the presence of our esteemed national and international guests from Malaysia, Bangladesh, Canada, and other countries. I also express my sincere gratitude to Reverend Dr. Peckham Tim Samuel and the Henry Martin Institute for their collaboration and assistance in making this conference a success. I am thankful to all my colleagues for their nice cooperation, particularly Dr. Atif Imran, who always remain with me. I hope this conference will rejuvenate and enrich our old days tradition of interfaith dialogue, tracing its roots from the Vedas to modern times. I hope deliberations and fruitful insights of the scholars in this context would open new avenues for fostering interfaith relations, peace, and coexistence. At last, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Now, I would like to felicitate our guests. So, I invite our student to come with the mementos. And I would like to call upon Professor Syed Ainul Hassan Sahab, our Vice Chancellor, to deliver the mementos. So, our keynote address, Professor Hamidullah Marazi. Professor Hamidullah. सारा एक साथ ले जाते हैं ना, ले जाओ पहले, सब एक साथ दे दिए, लेके बेरी साहब का दे दिए, बेरी साहब का दे दिए. अच्छा ठीक है. मैं बेसी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बेदी साहब को इनको पेश करें. प्रोफेसर हरमहिंदर सिंह बेदी. I would like to call Professor. मैं सैयद अली अशरफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप तशरीफ लाएं और एक सर आजी उनको लतीफ़ शाह काज़मी साहब उन दे दिए सर. लतीफ़ शाह काज़मी साहब और सुनिए मुश्ताक कादरी साहब को. मुश्ताक कादरी साहब को दे दिए. विजय साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोफेसर मुश्ताक कादरी साहब को मेमेंटो पेश करें. दे दीजिए ना. वीसी साहब वाले दे. मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रोफेसर सैयद ainul हसन साहब वाइस चांसलर साहब को मेमेंटो पेश करें. किताब लो. सर इस फेलिसिटेशन में 2 किताबें भी शामिल हैं जो हमारे पिछले साल फरवरी में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी. सर वो इसकी प्रोसीडिंग है जो किताबी शक्ल में हमारे सामने है और हमने उन मकालात को 2 हिस्सों में तकसीम किया था. अंग्रेज़ी के मकालात अलग हैं और उर्दू के अलग हैं.
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 किताबें आ गई हैं। पहली किताब है इस्लामिक जदीद और माबाद दौर जदीद में इस्लामिक स्टडीज़। ये एक मिनट लो, एक इधर दो। ये दूसरे की तरफ इधर से बढ़ा लीजिए, ये दूसरी आ गया। ये जो दूसरी किताब है इस्लामिक स्टडीज इन द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा एन असेसमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड ईरानियन स्कॉलर्स, ये दोनों किताबें जो है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की जो रिवायत रही है हमेशा से अपने सेमिनार के प्रोसीडिंग वो लेकर आता रहा है, तो उसी का एक जो है अगला कदम है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस सेमिनार के प्रोसीडिंग में जल्दी ही तबाह होकर आएगी। इससे पहले हमने अक्टूबर में भी एक कॉन्फ्रेंस की थी जो नेशनल सेमिनार था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी मकालात जो है तबाह हो चुके हैं और इंशाल्लाह किसी मौके पर उसकी भी रिलीज़ जो है वो हमारे सामने आएगी। नाउ आई वुड लाइक टू before inviting to deliver the keynote address, I would like to introduce Professor Hamidullah Maradi Sahab. Professor Hamidullah Maradi Sahab is a professor in the University of Kashmir and the Director of Religious Studies. Though his contribution in academia is immense and constantly not possible to summarize within the lines, but still it is now my great honor that I invited our keynote speaker, Professor Hamidullah Marazi, the Director, Center of Comparative Studies, Jammu and Kashmir, to address his esteemed gathering with keynote address. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जब तक दुनिया रही है नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए। Let noble thoughts come from all sides. Rig Veda. Kalimatul hikmah dalatul mu'min, fahisu wajdahu fahuwa ahqqu biha. Respected Professor and Professor Bedi Sahab, Dr. Victor Sahab, Professor Habib Sahab, Professor Fahim Sahab, Ali Mashraf Sahab, Professor Latif Sahab, all the dignitaries on the dais and of the dais. It's a great privilege to talk about inter-religious dialogue. Now the era of deadlock has been over. We need dialogue now. Victor Hugo had said, nothing is as powerful as the idea whose age has come. Now the age of inter-religious dialogue has come. Inter-civilization dialogue has come. And India had been the abode of this dialogue. There was samvad, there was no vivad. But now we have only clash of civilization, such theories. So those theories have created a lot of problems for the humans, sufferings, we can understand. But there is light shining from somewhere, that is shining from India. India has had been a great source of dialogue. All the religions have flourished here. Museum of religions. Buddhists, they had dialogue among themselves. So we have Hinayana, Mahayana. Then we have, different schools of thought of Vedanta, Advaita Vedanta, Devata Vedanta. Then we have Sufis, we have Rishis. You have everything here. Then we have Sikhism, then we have Bhakti movement. All these streams of thought, they have emerged out of dialogue. And this verse, which I have just quoted from Granth Sahib, Jab tak duniya rahiye nanak kuch suniye kuch kahiye. As long as this world exists, let us listen something and say something. Man is a speaking animal.
If we do start speaking, we will just create problems for ourselves. And problems can be solved only through dialogue. And it was Vivekananda who in 1893, in World Parliament of Religions, he went there and talked about dialogue. And then now that has become a celebration for all times to come. So this light has gone to West even from India. And we need to discover our roots and understand the value of this dialogue. Because as has been said by Badiuzzama Nursi, he says all the philosophies have emerged from the West. So there is thesis, antithesis, synthesis. There is clash. But all the religions have emerged from the East. There is dialogue. There is dawah. There is makalma. There is hiwar. So with these words, I am just starting on a few pages. Interfaith dialogue in India is a crucial mechanism for fostering peace, understanding, and societal harmony. As a nation home to numerous religious traditions, primarily Hinduism, Islam, Sikhism, and Buddhism, India's post-society requires a deep commitment to dialogue to bridge the gaps between its diverse religious communities. This dialogue, rooted in mutual respect and understanding, plays a vital role in promoting human flourishing and fostering collective societal progress. Historically, India has been a place where religious communities have engaged in intellectual, cultural, and spiritual exchange, contributing to their country's rich religious fabric. Figures like Darashiko, Shahullah Dehlvi, Sir Sayyid Ahmad Khan, among others, are central to the tradition of interfaith dialogue in India. Their teachings and actions reflected a commitment to exploring shared values across religious traditions, providing a foundation for contemporary discourse on religious coexistence. The diverse schools of thought within Hinduism, the rational and ethical contribution of Islamic scholars, and the inclusive philosophy of Sikhism demonstrate a long-standing history of engagement between these faiths. This historical legacy underscores the importance of interfaith dialogue in India, not just as a theological exercise, but as a path to societal cohesion and intellectual growth. The Mughal Empire offers one of the most notable examples of interfaith engagement in India's history. Rulers like Akbar promoted policies of religious tolerance and mutual respect between Hindus and Muslims. We know Ibadat Khana and other such type of institutions which were created. This policy of inclusivity allowed both Hindu and Muslim communities to coexist peacefully and engage in intellectual exchange. Dara Shukru, a Mughal prince, exemplified this spirit of religious unity through the translation of the Upanishads into Persian. You can understand the books, the sacred books of Hindus were translated into Persian by a Muslim and by a prince. And such was the cohesion. And the foundation of Golden Temple was laid down by Mir Qadri. Such was the relationship among different communities. And bridging the philosophical gap between Hinduism and Islam, philosophical gap, not only theological. His work emphasizes the common spiritual essence shared by both traditions and sought to demonstrate that despite outward differences, the ultimate truth of divine unity was a central tenet in both. In parallel, Islamic thinkers like Shahullah Dehlvi underscored the importance of acknowledging the ethical and spiritual similarities among religions. Shahullah Dehlvi's works articulated that Hinduism, Islam, and other faiths share core values such as justice, monotheism, and ethical living. His inclusive vision, which extended beyond the confines of Islamic teachings, reinforces the idea that spiritual unity transcends religious doctrines. Sufism played a significant role in promoting these cross-religious dialogues. Sufi mystics like Hazrat Nizamuddin Awliya and Amir Khusru advocated for love, devotion, and the recognition of the oneness of God, which resonated with the devotional aspects of Hindus' Bhakti movement. The synthesis of Sufi and Bhakti ideals further solidified the cultural and spiritual connection between the two communities, contributing to the broader concept of composite culture in India. The historical interplay between Hinduism and Islam during the Mughal period facilitated the creation of a unique composite culture in India.
where art, music, language, and traditions from both faiths merged. This cultural synthesis allowed for a shared social identity and transcended religious boundaries. The Mughal emperors, particularly Akbar, adopted policies that encouraged mutual respect for diverse cultural practices, creating a society where both Hindu and Muslim traditions could flourish side by side. Sir Said Ahmad Khan's efforts in the 19th century further contributed to the dialogue by advocating for the modernization of Islamic thought by recognizing the importance of Hindu culture. His emphasis on rationalism, intellectual engagement, and education allowed for the reconciliation of religious traditions through mutual understanding. Sir Said's pioneering work in promoting dialogue between Hindus and Muslims remains a cornerstone of modern interfaith relations in India. Today, the role of religion in shaping India's social identity continues to be contested. However, the ongoing efforts by intellectuals and spiritual leaders to uphold the values of coexistence and respect to provide a foundation for counteracting the divisive forces that threaten to undermine India's pluralistic identity. Contemporary challenges. Despite the historical tradition of religious harmony, contemporary India faces significant challenges in maintaining interfaith dialogue. The rise of religious nationalism, the politicization of religion, and increasing religious polarization has exacerbated tensions between communities, particularly Hindus and Muslims. However, figures like Maulana Wahiduddin Khan argue that dialogue, when approached with sincerity and respect, can counteract these divisive forces and foster a spirit of collaboration and unity. The works of scholars like Murad Hoffman suggest that Islam, with its emphasis on social justice and community values, offers an alternative to the individualistic and materialism often associated with Western globalization. Hoffman's advocacy for interfaith dialogue highlights the importance of creating spaces where different religions' perspectives can come together to discuss shared moral and spiritual values. You may be knowing about Hoffman. He was a German, ambassador in Morocco, and then he was reverted, and then he wrote a book, Islam the Alternative, and under book, Common Word, Kalimat Uswa. So he says that this is the way now, and we can just bridge the gap between different communities through dialogue. Similarly, Samuel Huntington concept of clash of civilization posits that cultural and religious differences are a source of inevitable conflict. While this thesis has been critiqued, it serves as a reminder of the challenges that modern interfaith dialogue must address. West is advocating clash of civilization theories. And in India, we had dialogue among civilizations, which was also highlighted by Khatmi, President Khatmi of Iran. So in this way, there are two paradigms. One is clash paradigm, second is dialogue paradigm. But India has been the home for this dialogue paradigm. In this way, we can provide a paradigm for new world to have dialogue. However, despite the complexities of contemporary religious politics, interfaith dialogue remains an essential tool for promoting understanding, peace, and cooperation. The teachings of Maulana Azad, Maulana Wahiduddin Khan, and other scholars of India who are representing modern times, focusing on reconciliation rather than confrontation, provide a pragmatic framework for addressing religious differences and fostering social progress in India's pluralistic society. Conclusion. India's rich historical legacy of interfaith dialogue provides a strong foundation for contemporary efforts to promote religious harmony. The teachings of figures such as Daro Shukru, I have mentioned, Shahullah Dahlvi, Sir Said Ahmad Khan, Mullah Abdul Azad, Mullah Wahiduddin Khan, and many others, and especially Sufis, the importance of mutual respect, intellectual engagement, and shared commitment to values such as justice and compassion. These can become framework for a new era of interfaith dialogue. These principles, when applied in today's context, offer a vision of religious coexistence that can address the challenges of modern religious polarization. In an increasingly globalized world, the continued promotion of interfaith dialogue remains crucial for fostering peace, understanding, and social cohesion. India's religious diversity, rather than being a source of division, should be celebrated as a rich cultural resource that can contribute to global conversation on tolerance and mutual respect.
By embracing the spirit of cooperation and shared ethical values, India can lead the way in demonstrating how different religious traditions can coexist and thrive together in harmony. Gulhai Ranga Rang se hai, Zidat Chaman. Shukriya. Thank you, sir, for this short and deliberated lecture. Because we are running short of time, so we request our keynote speaker to shorten his lecture. His paper is in about 25 pages, so it will be published, inshallah. Then we will able to read all the insights through this book. Now, I would like to call our chief guest, Professor Harmohinder Singh Bedi. Professor Harmohinder Singh Bedi is a renowned Hindi author and academician from Punjab. Presently, he is the Chancellor of Central University of Himachal Pradesh. He is a member of ICSSR and executive member of Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya. Dr. Bedi works have highlighted the spiritual, cultural, and religious contribution of Punjab to Hindi language, literature, and generally philosophy of Hindi. His Hindi Kavya is also be published in 5 languages, and many other PhDs have been done on his writings. Now I would like to invite Professor Mohinder Singh Bedi to come and address the audience. ये वहाँ रख दें क्या? वहाँ रख दें। परमादरणीय प्रोफेसर हसन साहब, मंच पर मौजूद प्रोफेसर, अभी आपने उनका कीनोट सुना और हाल में बैठे हुए विद्वान सज्जनों, अभी अपने कीनोट एड्रेस में डॉक्टर साहब ने कुछ मुद्दे हमारे सामने रखे कि इंटरफेथ और भारत के संदर्भ में ये इंटरफेथ डायलॉग क्या है। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले गुरु नानक देव जी का हवाला भी उन्होंने पेश किया। इंटरफेथ के अर्थ सप्त सिंधु, जब पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था, पंचनद कहा जाता था और बाद में मेडिवल पीरियड में पंजाब के नाम से पंजाब को जाना गया। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट रेफरेंस हैं इंटरफेथ डायलॉग को समझने के लिए। और ये जो नॉर्थ का क्षेत्र है हिंदुस्तान का, तो इंटरफेथ इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऋग्वेद पंजाब की धरती पर लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया और ऋग्वेद का पूरे एशिया के देशों पर गहरा असर पड़ा और एशिया के स्कॉलर्स ने अपनी जड़ें, अपना कल्चर, अपनी धार्मिक परंपराएं, अपनी फिलॉसफी ऋग्वेद के साथ जोड़कर ढूंढने की कोशिश की। ये
पहला इंटरफेथ डायलॉग था एशिया के देशों का हिंदुस्तान के साथ। और अभी भी आप देखिए कि यूएनओ ने जो इंटरफेथ डायलॉग दुनिया के लिए जरूरी माना है, उसमें ऋग्वेद, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल, ये 4 बड़े ग्रंथों को इंटरफेथ डायलॉग क्या बेसिक सेक्रेड टेक्स्ट के रूप में यूएनओ इसका इस्तेमाल कर रही है। मेरे सामने मेरा अपना खित्ता पंजाब है। आप देखिए कि मेडिवल पीरियड में पहला इंटरफेथ डायलॉग बाबा नानक से शुरू होता है। गुरु नानक देव 25 साल पैदल एशिया और हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में जाकर इंटरफेथ डायलॉग का सहारा लेकर एक नई हिंदुस्तान की पहचान बनाते रहे। 25 साल। और इंटरफेथ का दूसरा एस्पेक्ट देखिए, उनके साथ थे भाई मर्दाना, इस्लाम के पैरोकार। भाई मर्दाना गुरु नानक से 5 साल बड़ा था। 55 साल इंटरफेथ डायलॉग बाबा नानक की वाणी के माध्यम से पूरे एशिया के देशों को प्रभावित करता रहा। और ये जो डायलॉग था, ये हिंदुस्तान की हदों सरहदों तक सीमित नहीं रहा। बाबा नानक मक्का, मदीना और अरब के देशों में पैदल घूम घूम कर उन्होंने गुरमत दर्शन का एक अलख जगाया और दुनिया को हिंदुस्तान की तहजीब के साथ जोड़ा। और आप देखिए कि गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरु साहबान हैं। 19 हिंदुस्तान के वे संत, भक्त, सूफी, बड़े चिंतक, दार्शनिक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इंटरफेथ डायलॉग पैदा किया। गुरु ग्रंथ साहब की अगर आप देखें तो 19 संत और भक्त, 11 भट्ट कवि जिन्होंने गुरु साहबान की तारीफ में अपनी वाणी रची, और 6 गुरु साहबान के अलावा जो हैं, ये इंटरफेथ के बहुत बड़े मसीहा है। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो बाबा शेख फरीद अरबी और फारसी के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े सूफी शायर, और बाबा शेख फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है 12वीं सदी के। और पंजाबी के अपनी उस खित्ते की जबान के पहले जो शायर हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, वो बाबा शेख फरीद हैं। इंटरफेथ डायलॉग भारतीय भाषाओं में शुरुआत करने वाले शेख फरीद हैं। और शेख फरीद ऐसे बड़े सूफी कवि हैं कि वो पूरे का पूरा जो बाद में भक्ति मूवमेंट आता है, उस भक्ति मूवमेंट के केंद्र में बाबा शेख फरीद के द्वारा जो इंटरफेथ डायलॉग पैदा किया गया था, पूरी भक्ति कविता उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसका असर आप देखिए। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। हिंदी में 12वीं शताब्दी में बिल्कुल शेख फरीद के बाद एक कवि थे अब्दुल रहमान। उन्होंने संदेश रासक ग्रंथ लिखा। हिंदी वालों को ये फिक्र रहता था कि 12वीं शताब्दी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता,
हिंदी के एक बहुत बड़े स्कॉलर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उसे एडिट किया और अपने एडिटोरियल नोट में लिखा कि मुझे इस कवि की भाषा समझ में नहीं आती, मैं इसकी भाषा को लेकर परेशान हूं, पर यह 12वीं शताब्दी का कवि है और उस समय की खास तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक मौका ऐसा हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर होकर चले गए। उन्होंने वहां जाकर पंजाबियों की भाषा सुनी और पंजाबियों की भाषा में खास करके लैंधी और जो मुल्तान के एरिया में जबान बोली जाती थी, तो अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला था, बहुत बड़ा सूफी दार्शनिक चिंतक था। और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वहां जाकर वो जबान सुनी और उन्हें लगा कि ये जो मैंने लिखा कि मुझे लैंग्वेज की समस्या है इस शायर के साथ, ये अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला है, बहुत बड़ा सूफी कवि है और ये इस खित्ते की, अपने खित्ते की जबान को बाकी जबानों के साथ मेल करवाकर उसका उपयोग कर रहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोबारा उसका एडिट किया और लिखा कि अब्दुल रहमान शेख फरीद के बाद भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा सूफी विद्वान है और हिंदी कविता में जो सूफी लहर है उसकी शुरुआत भी हम अब्दुल रहमान के संदेश रासक से कर सकते हैं, क्योंकि ये दो धर्मों के बीच एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपेंडिक्स में ये बातें जोड़ी। तो इंटरफेथ का जो मेडिवल डायलॉग है वो गुरु ग्रंथ साहब से शुरू होता है और गुरु ग्रंथ साहब में आप देखिए किसी एक एरिया के ये वाणीकार नहीं है, वाणीकार अलग अलग एरियाज के हैं। अभी मैंने बाबा शेख फरीद की बात की, 10वीं शताब्दी के बहुत बड़े संस्कृत के कवि थे जयदेव, संस्कृत के कवि थे, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी है। कबीर साहब की सबसे ज्यादा वाणी भक्त कवियों में गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि अलग अलग खित्तों, अलग अलग कारोबारी धंधों से जुड़े हुए जो उस समय बहुत बड़े हमारे फिलोसफर थे, कवि थे, उनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में रखी गई। कबीर साहब बुनकर थे, रविदास चमड़े का काम करते थे, धन्ना जाट था, सेन नाई था। और इन सब लोगों को 1604 में गुरु अर्जन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में रखा। अगर हम आज इंटरफेस डायलॉग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंटरफेस का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। मैं जब गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुकता हूं, माथा टेकता हूं, तो मैं केवल बाबे नानक की वाणी के आगे नहीं झुकता, मैं शेख फरीद साहब को भी आगे झुकता हूं, मैं रविदास के आगे झुकता हूं, मैं कबीर के सामने झुकता हूं। ये इंटरफेथ का फर्स्ट डायलॉग मेडिवल पीरियड में गुरु ग्रंथ साहब है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया है, मैं अमृतसर में रहता हूं, मुझे 2-3 बार अपने रिसर्च के सिलसिले में पाकिस्तान जाने का मौका मिला और मैं दंग रह गया। मुझे गंगा यमुनी तहजीब समझ में नहीं आती थी कि हम बार बार गंगा और यमुना का रेफरेंस देकर इस तहजीब की बात करते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प घटना
मुझे याद है। मैं लाहौर में रुका हुआ था, वहां बाबा बुल्ले शाह का उर्स मनाया जाता है कसूर में। तो उस सेमिनार के कॉन्टेक्स्ट में हम वहां गए हुए थे, लाहौर में रुके हुए थे। तो सुबह सैर करने के लिए निकला, तो एक बहुत बुजुर्ग मुसलमान औरत थी, कोई मेरा ख्याल वो 95 साल की रही होगी। उन्होंने देखा कि एक सरदार पगड़ी बांधकर मेरे घर के आगे टहल रहा है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान पंजाब से आया हूँ। तो मैंने बताया कि बुल्ले शाह का उर्स है, उसमें कोई सेमिनार है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे कहता अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, बैठा, उनके पौत्र आ गए, बातचीत होने लगी, चाय पिलाई। जब मैं उठा तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके पास गंगा जल है? मैं हैरान हो गया कि ये 95 साल के एक दूसरे धर्म से जुड़ी हुई खातून मुझसे गंगा जल के बारे में पूछ रही है। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे, मैं वहां से आई हूं और हमारे जो पूर्वज हैं वो कई बार बातें करते हैं, तो मैं अपने पोतर पौतरों को अपने मोहल्ले में गंगा जल दिखाना चाहती हूँ। बुल्ले शाह की मजार पर गए, वहां के मेंबर पार्लियामेंट थे चौधरी साहब, मैं उनके साथ बैठा था। उर्स शुरू हुआ तो मैंने देखा कि स्टेज के ऊपर मुझे लगा जैसे आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान शरीफ से। तो मैंने जब बहुत ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि ये तो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। मैंने मेंबर पार्लियामेंट मंजूर अली चौधरी जी से पूछा, मैंने कहा ये संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको क्या जरूरत है बुल्ले शाह का उर्स शुरू करने से पहले? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वाल्मीकि की रामायण में लव कुश कांड है। हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि लव के नाम के ऊपर लाहौर बना, कुश के नाम के ऊपर कसूर बना। बाबा बुल्ले शाह कसूर का रहने वाला था, और हम जब बाबा बुल्ले शाह का उर्स मनाते हैं तो लव कुश कांड के 11 श्लोकों का संस्कृत का उच्चारण करते हैं। मैंने जब ध्यान से वो श्लोक सुने तो मुझे लगा कि इससे बड़ा इंटरफेथ डायलॉग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो सकता। ये सिद्धांत में हम जो मर्जी कहें, आवाम में आप देखिए कि एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों के प्रति, एक दूसरे की आस्थाओं के प्रति किस तरह से हिंदुस्तान का आवाम जुड़ा हुआ है। सेमिनार में ठीक है, बहुत सारी बातें हम करते हैं, पर ये कोई मामूली खित्ता नहीं है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, और वहां कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी दूसरी बात आड़े नहीं आती। ये हमारा इंटरफेथ डायलॉग वहां पर काम आता है। और ये जो आवाज है, ये पूरी आवाज गुरु ग्रंथ साहब के, आपको जब भी कोई मौका मिले कभी उनकी गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों में देखें तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात आप देखिए कि इंटरफेथ डायलॉग के कई कॉन्टेक्स्ट हैं और बड़े मजेदार कॉन्टेक्स्ट हैं। वाघा बॉर्डर के दोनों ओर आप देखिए, शाम को भीड़ जुटती है वाघा बॉर्डर पर अमृतसर में। लाहौर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। और वहां मैं 2-3 बार पाकिस्तान गया हूं, तो वहां होता क्या है, वो कहते हैं जो वहां खजूर और नारियल, इन दोनों को इंटरफेथ फ्रूट कहते हैं। अब आप देखो कि अवाम में क्या है कि लोग यहां से जाते हैं, वो वहां वो मांगते हैं कि हमें नारियल, वहां से लोग लौटते हैं खजूर, और इंटरफेथ फ्रूट कहते हैं। जब वहां ट्रक आते हैं ना लदे हुए खजूरों के, खजूर नहीं कहते वो, इंटरफेथ फ्रूट। ये इंटरफेथ का कितना जबरदस्त हमारी कुदरत का एक मैसेज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हिंदुस्तान में इन सभी बातों को समझने की जरूरत है। और मैं लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी में कई दिन मैंने काम किया। मैं हिंदी की पोथियों को देखने गया था, तो इधर मुझे पता था कि जब डॉक्टर हबीब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रिलीजियस स्टडी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, तो इन्होंने भी एक इंटरफेथ क्रिएट किया। पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में मेरा और विश्वास गहरा हो गया। डॉक्टर साहब ने कुरान शरीफ का पंजाबी में तर्जमा किया, और एक बहुत बड़े जो पंजाबी के स्कॉलर्स हैं, पंजाबी के धार्मिक साहित्य के साथ जुड़े हुए फिलोसफर हैं, वो पूरा का पूरा डॉक्टर साहब का ट्रांसलेशन किया हुआ उन्होंने एक इंटरफेथ डायलॉग पंजाबी में पैदा किया। और हमारे अकाल तख्त साहब के जो जथेदार थे डॉक्टर हरप्रीत सिंह, डॉक्टर साहब के विद्यार्थी थे, और अभी डॉक्टर साहब ने मियाँ मीर का जिक्र किया, तो मियाँ मीर के बारे में एक नई तरह की चेतना डॉक्टर साहब के उन आलेखों से जागी। जो बात मैं करनी चाहता हूं, जब मैं लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी में गया, अब आप देखिए, महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े किताबों के चाहने वाले व्यक्ति थे। वो जब भी किसी शहर के ऊपर हमला करते थे या लड़ाई के आसार नजर आते थे, तो एक बैलगाड़ी भेजते थे पूरे शहर में कि आप पवित्र पोथियां इस बैलगाड़ी में रख दो ताकि इनका नुकसान ना हो। लोग हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर देते थे। और उनके 2 मंत्री थे, अजीरुद्दीन, फकीरुद्दीन। और जब महाराजा रणजीत सिंह दुनिया से चले गए, तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सारी लाइब्रेरी लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी को दे दी। और वहां आप देखिए, मैंने देखा कि लगभग भारतीय जबानों में पवित्र कुरान शरीफ के ट्रांसलेशन पड़े हुए हैं। 13-14 जबानों में तो मैंने देखा, वहां बंगला में है, उड़िया में है, डोगरी में है, कश्मीरी में है, पंजाबी में है। और ये एक पूरी की पूरी एक इंटरफेथ डायलॉग की इंडियन लैंग्वेज के थ्रू एक ट्रेडिशन वहां पर है। तो मुझे लगता है कि इंटरफेथ डायलॉग को समझने के लिए
ये जो इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग धर्मों की पवित्र पोथियां जिनका अनुवाद हुआ है, उनका उल्था हुआ है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो ये सारे के सारे लिंक, ये सारे के सारे पुल हमें वहां दिखाई देंगे और आने वाले समय में हम इन पुलों को बड़ी बेहतरीन ढंग से पार कर सकते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई वाघा बॉर्डर या कोई दूसरे बॉर्डर हमारे रास्ते में आएंगे, बल्कि हमें ये जो एक कुदरत ने आज़ादी दी है अपने धर्म में रहने की, जीने की और दूसरों को समझने की, ये हमारे साथ रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. Now we have our guest of honor, Dr. Victor Adwin. With great respect and anticipation, I now invite Dr. Victor Adwin to deliver his address. Honorable Vice Chancellors, esteemed professors, and dear students, dear brothers and sisters. I'm very grateful to be here on behalf of Henry Martin Institute. I'm grateful to be here because of the professors here. I'm grateful to be here so that I have an occasion to engage with you, dear brothers and sisters. Reverend Dr. Samuel Pakiam, one of the good scholars on Christian-Muslim relations, is doing a wonderful work of helping Christians and Muslims to engage with one another intellectually, opening dialogue with other religions, diverse Indian religions. So he has been my mentor, brother, and friend for many years. So I'm very grateful to him. I acknowledge that his guidance in my life to shape my life as a student of dialogue and Christian-Muslim relations. So, dear friends, dialogue between religions, I think, founded on a deep recognition that we are all created by God. We come from God, we return to God. That is at the heart of dialogue. So our fraternity as brothers and sisters is founded on this deep faith. And secondly, we also recognize every human person is a dignified person. Human dignity is at the heart of dialogue. So our faith in God who created us and our faith in the dignity of each human person is at the heart of dialogue. Pope Francis has been a great supporter of interreligious dialogue, especially Christian-Muslim relations. He emphasizes that we must respect and love one another as brothers and sisters. He says that we must learn to understand the suffering of the other. And through his word and his writings and his meetings, he emphasizes that no one abuse the name of God for violence. And he invites people to work together for justice and peace. Studying his documents, following him
all his talks among Christians and among people of other faiths, especially Muslims, I draw three important lessons I thought I will share with you briefly here. The one is he invites that we must transform rivalry into solidarity. Christian-Muslim relations is interspread with a lot of hostility and misunderstanding. He says that we must transform it to solidarity. If we think the other is my brother and sister, we will be able to do this. Because of historical, political, other reasons, there was segregation, there was conflict, war, and hostility. But when we recognize there is a way out of this mess, when we recognize that we belong to one human family, whatever religion we belong to, we are brothers and sisters. Our origin and destination is same, that's God. If we come to this recognition, then we will be able to transform rivalry into solidarity. And India, our nation, is a beautiful example, as professors emphasized, how we are living dialogue historically, culturally over the centuries. Through language, through music, through food, architecture, dress, we are living a life of solidarity. So India is a beautiful example for the world. And secondly, Pope Francis says we must understand the suffering of the other. Often we think that our suffering is greater. My suffering is more than yours. My suffering and my tribulation, my pain is more than yours. He says, if I enter into the shoes of the other, when I recognize the other to have suffered a great deal, then we will find a way for reconciliation, for forgiveness, for better understanding. And we will recognize a way that we can come together as one family of God. We will find a path to reconciliation. We will find a path to forgiveness and a life of solidarity. And thirdly, he says that intolerance and discrimination ought to have no room in religion. A true faith is not deciding for some creed and using it as a motivating factor to attack others. He says a true faith is acknowledgement of the other in total sense, complete sense. So that will help us to walk away from all that discriminate one against the other, all that forms of misunderstanding, hostility, and to recognize that we are brothers and sisters. So dear friends, dear professors, and dear brothers and sisters, in this opening of this international seminar on dialogue between religions, dimensions of interfaith and interfaith dialogue in India, we are a living dialogue, and I think this seminar will invite us to reflect deeply and articulate. I think we are not articulating adequately our experiences of dialogue. Professor Vice Chancellor beautifully shown how in the Holy Scripture has the dimensions of that. We hardly articulate in languages that the world can understand. I think these seminars like this or an invitation for young generations, dear students of Henry Martin Institute and dear students of MANUU, is inviting you to reflect, articulate, write in languages
where people will come to know that we are living dialogue in a beautiful way. We are examples for others. At the same time, also it will open us for mutual learning. We have something to share. We have something to learn from. With these words, I conclude my opening remarks. Thank you. Thank you, sir. Now it's time to presidential remark. And it is indeed a moment of great honor and pleasure to have with us Padma Shri Professor Syed Ainul Hassan, Honorable Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, as the chair of this inaugural session. Sir, your wisdom and vision have always been an inspiration to our scholar and student alike. I invite you to come and deliver your special address. ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کے کنمباز. Our honorable guest, Professor Harmohinder Singh Bedi ji, Mr. Victor from Henry Martin, and a very good friend of mine, Professor Hamidullah Marazi, dignitaries, participants, colleagues, girls and boys. As a matter of fact, the keynote speaker, we lived together, I think, long back, see, in JNU. I don't know why he has changed his name. Is it? Because of poetry. Huh? Because of poetry. Actually, now he's writing poetry. Okay. So this is pen name. This is your nom de plume. Huh? This is his pen name, Abdullah is official. Okay. Anyway, whatever is official, but yes, there is a friendship. So definitely we acquire knowledge from their talk. But there are many more things. You know, in 2003-4, I suppose, there was a book in discussion written by none other than then President of Iran, Khatami Sahab. It was Dialogue of Civilizations. Not exactly dialogue of religions, rather, civilizations. And now we have, today, interfaith dialogue. So I think this somewhat, same thing. I don't know who is the best supplier of interfaith dialogue. कोई तो है हमारे बीच जो जमाने से दुनिया की नुमू से लेकर आज तक वो डायलॉग कर रहा है. आप बता सकते हैं कि वो कौन है? मेरी समझ में तो एक ही चीज है जिससे डायलॉग हो रहा है, और वो है ऑक्सीजन. ये जो नॉन बिलीवर है उसके यहां भी जा रही है, जो बिलीवर है उसके यहां भी. कोविड इसको भी हो रहा है, कोविड उसको भी हो रहा है. ऐसा डायलॉग आप समझिए जमाने से चला आ रहा है. सादी ने लिखा था, हर नफसी के फरूमी रवत मुमद्दे हयातस व मुफर्रहे ज़ात, बस दो शुक्र अंदर बायत. इसके लिए दो शुक्र, हर नफस, हर सांस के जो फरूमी रवत मुमद्दे हयात, उससे पता चलता है कि हम जिंदा हैं. और मुफर्रहे ज़ात, इंसान की ज़ात को, ये ज़ात जो है वो अजीब चीज है, पूरा मन है इसके अंदर, जहाँ जिसको
वेदास में मन कहा गया, वो उपनिषद में भी उसको मन लिखा, दाराशिकों ने जब इंटरमिंगलिंग ऑफ ओशंस लिखा है तो उसमें मन लिखा है। तो ये मन को भी मुफर्रिह ज़ात, ये फरा बख्श है। There are many man-made distractions. इंटरफेथ भी मैन-मेड डिस्ट्रक्शन कर रहा है। ये जो छोटे छोटे खैमे बना के हमने रखे हैं, इनमें डायलॉग हो ही नहीं रहा है। डायलॉग हो तब ना बात है। हमारे पास अभी बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो आके मेरे वालिद थे, मैं नहीं। बड़ी खूबसूरत बात है साहब, आपके वालिद थे, आप अच्छे हो गए, वालिद साहब क्या हुए वो आप बताएं। एक लामजहबियत का सबूत देना एक फैशन है। हम तो सारे मजाहिब में यकीन रखते हैं। क्यों भाई, क्यों रखते हो? सारे मजाहिब में क्यों रखते हो? तुम्हारा अपना मजहब है, उसको कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हारा अपना दीन है, उसको क्यों कमजोर समझते हो? उसकी भी अहमियत है, उसकी भी वैल्यू है। कौन सी बदतहजीबी सिखा रहा है वो मजहब कि जिसके लिए शर्मिंदगी हो? अब आप देखिए, मैंने कहा आपसे, ये नफस, ये सांसें, शुक्रगुजारी, आप जाइए कि ये हम किसी और को अपना मावा मलजा समझेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। का वो कौन? का आग के पास जाएंगे तो आग कहती है आतिश अमान नहीं मिलते है, आतिश परस्तरा। वो जो आग की परस्तिश करता है वो भी अगर आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा। हमने कहा हवा को मानेंगे। फौरन निकल के आया एक शायर का, हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ हमारा दिया बुझाना था। लीजिए, उसको भी आप अपना मेंटर नहीं मान सकते, उसको भी आप अपना रिलीजियस गुरु नहीं मान सकते, उसके ऊपर भी ईमान नहीं ला सकते। आपने कहा कि डस्ट को मान लेते हैं। डस्ट को मानेंगे, मिट्टी गाड़ने का काम कर देगी। फिर आप कहेंगे पसे मुर्दन बनाए जाएंगे कांसे मेरे गिल के, तो कांसा ही बनेगा और कुछ बनने वाला नहीं। क्या पानी को मानेंगे? पानी भी डुबो देगा, आग जला देगी, हवा उड़ा देगी, पानी डुबो देगा, मिट्टी गाड़ देगी। अब कहां है भाई कोई पनाह है? मैं कहा सबको मान लेंगे। अच्छा है, सबको मान लेंगे कि भाई ये सब हैं। पता लगा कि गजल से बहुत दूर हो गया, तगज़ुल और मुगाजले से दूर हो गए, जो सप्लाई लाइन है जिंदगी की, जहां आप किसी को अपना बिलवड तो मानते होंगे, कोई तो होगा बिलवड। आपने कहा मैं एक बिलवड की जुल्फों पर फिदा हूं, एक की आंखों पर, एक के होठों पर और एक की सुराहीदार गर्दन पर है। तो जवाब आया, एक ही दिल है तो बेचे खरीदार के हाथ, टुकड़े हो जाएगा वरना जो बिका चार के हाथ।
हो जाएगा? तो ये जो डायलॉग है, कीजिए डायलॉग, किसी बिलवट से ही कीजिए। सब कुछ पसंद आए जिसका, उससे डायलॉग कीजिए। जिसका कुछ कुछ पसंद आए उससे डायलॉग क्या फायदा। मगर हां, सब कुछ नहीं किसी में, मगर कुछ सभी में है। ये जो कुछ है, इसी में सब कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। चलिए मैं आप ही की बात कर दे। आप देखिए कितना खूबसूरत इस्तेमाल हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्हीं रिलीजियस कोड्स का हुआ, इन्हीं सिंबल्स का हुआ। आपको पता है सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह, वो सत्याग्रह कोई रिलीजन कहेगा असत्याग्रह, आग्रह होगी नहीं, असत्य, असत्य की असत्य हुई, सत्याग्रह। अच्छा, कौन रिलीजन कह रहा है हिंसा के लिए? महावीर, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। और देखिए कल अभी 3 शाबान, आज 3 शाबान है, कल हो चुकी, कल पैदाइश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और डांडी मार्च 72 सिंबल लेके करबला का गए। देख रहे हैं आप, सियासत है। गांधी जी कोई ऊपर से हुए आदमी, उतरे हुए आदमी तो नहीं थे, हमारी में से, आप में से थे। उन्होंने भी एक सियासत की अंग्रेजों को हटाने के लिए, कॉलोनियल पावर को खत्म करने के लिए। इस्तेमाल किस चीज का किया? इन्हीं कोड्स का किया, इन्हीं सिंबल्स का किया, जिससे आपको आजादी हासिल हुई। हम भी कर सकते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा फरीद का नाम लिया अभी उन्होंने, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। किसमें पढ़ना चाहेंगे आप? गुरुमुखी में? हम तो फारसी में पढ़ेंगे बाबा फरीद को। मैं भाई फारसी का स्टूडेंट हूं, फारसी में पढ़ लूंगा। हमारे पास वो सब फारसी में मौजूद है जो कुछ संस्कृत में लिखा गया है। पढ़ने वाले की जरूरत है, आप पढ़िए। मगर हां, ये याद रखिएगा, कभी 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 वहां भी पहुंचने की कोशिश की जाए जहां दूसरा बोल रहा है, कभी वहां जहां दूसरा खामोश है। ये खामोशी और बोल दोनों में निकाह होना चाहिए, वरना मुश्किलें आगे बढ़ जाएंगी। रिश्ते ऐसे नहीं बनते। रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि जहां गम और खुशी दोनों एक साथ मिले। रिश्ते वफा के टूट गए या के जुड़ गए, रुख इम्तिहाने इश्क की मंजिल से मुड़ गए। और ज़ौक़े वफा यही है तो ऐसी वफा पे खाक मैयत पड़ी है, शमा की परवाने उड़ गए। Now we are in such a world, we know, dynamic world, market-oriented economy, everything worldly, but spare a little time for some spiritual things also. Your spirit, something ruhani. Discover yourself. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. If you discover yourself, then life is kamyab. There's no zarurat, no need for anything else. And I hope, I'm sure, and I hope that you see this brainstorming session will create something and the voice will go
from Maulana Azad National Urdu University. Thank you very much. Thank you, sir, for your presidential remark. Now, I would like to call upon Ms. Dishan Sara, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, to deliver words of thanks. एक सेकेंड, शुक्रिया के अल्फाज से पहले मैं एक ऐलान कर दूं कि ये प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराजी के साथ ये हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये अब इन्होंने सजेशन दिया है कि इंटरफेथ डायलॉग ये हुआ, अगले साल हम इंटरफेथ डायलॉग करेंगे, जिसमें ख़ास तौर से जो सेक्ट्स हैं उन सेक्ट्स को अलग से डिस्कस करेंगे, और ये मानू को हम इंटरफेथ डायलॉग का एक सेंटर के तौर पर डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह। Thank you, Dr. Atif Imran, and a very good afternoon to everyone. I regard this an honor and privilege to propose my heartfelt vote of thanks and gratitude to each one of you who is present here in this occasion of international conference on such a wonderful theme, interfaith dimensions of interfaith dialogue. I take this opportunity to express my gratitude and sincere thanks to Honorable VC MANUU Padma Shri Professor Syed Ayman Hassan for his esteemed presence among us and for presiding over the function. Thank you, sir, for your encouraging words and guidance. We now, on behalf of the department, convey our gratitude and heartfelt thanks to Professor Hamidullah Mirazi Sahab to accepting our invitation to deliver keynote address. We place on record our deep sense of gratitude to Professor Padma Shri Har Mohinder Singh Bedi, Honorable Chancellor, CUHP, to accept our invitation to come here and to share your valuable thoughts, sir. Thank you so much. My heartfelt thanks goes out to our esteemed guest of honor come host of this conference, Dr. Victor Edwin, and to Dr. Pakyam T. Samuel in his absence, to the whole institute, Henry Martin Institute, for their active partnership and wonderful collaboration in this conference as an individual and as a team. Thank you so much, sir. And now we must thanks to all the dignitaries who have come here to join with us from another universities, professors, teachers, scholars, and within the universities, the deans of the schools, directors of the centers, HODs of different departments, professors, dear colleagues, students, and scholars to join us. And now we must appreciate and thanks to our own HOD, the head of the department, Professor Habib sir, because he is the brain behind this conference, who is the, I can say, driving force and motivational fire behind this entire conference. And now I cannot forget to appreciate and express our sincere thanks to all the contributors, the whole staff of IMC MANUU and the director, Dr. Rizwan Ahmed sir, and the guest house staff, the library staff, and the horticulture, etc. Now, last but not the least, I would like to express my thanks to our own colleagues, Professor Fahim Akhtar sir, for his guidance, and to Dr. Atif Imran, Dr. Irfan Ahmed, Dr. Sirajuddin, whose hard work making this whole conference a great success, and also to our dear scholars and students, our clerk and attender, Dr. Shabbir Ahmed and Mr. Mohammad Laif. And thank you one and all once again for joining us here. Thank you so much.
Now I would like to call upon to stand up and the beginning of national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चाय का नज़्म है बाहर, चाय नोश फरमाएं और उसके जस्ट बाद 10 मिनट के बाद ही हमारा स्पेशल लेक्चर है जिसमें प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी साहब और डॉक्टर विक्टर एडविन का खिताब होगा। तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद हम इसी हॉल में दोबारा से मिलते हैं।